So in this session, we'll be discussing a very important concept of object-oriented programming, and that is class and object. Now, any object-oriented language, it can be .NET languages, it can be Java, it can be C++. Every object-oriented language starts with the concept of classes and object. So if we understand properly what is a class and what is object, then the object-oriented programming will become easier. So for that, I have shared my screen and you can see one example here. There is a person, name is John, his age is 35 years, his city is, he belongs to Delhi city and is male. Similarly, there is an object, Desi. Her age is 20. She belongs to the city Pune and she is a female. So these are the objects represented by a class called person. So what is a class? A class represents similar objects. A person class will represent all objects. It will represent me, it will represent you, it will represent any person in the world. So to represent an object, there are two things that we put in the class. There are some information regarding the object and there are some actions which that object can perform. For example, a person object will have information like his name, his age, his city, his gender. It can be his address. It can be his passport number. It can be his Aadhaar number and many information. What we consider is those information which are required in the program. So if in the program we require only age, city and gender, we'll keep the information age, city, gender, name, etc. And if we have some more information is required, then we can keep more information. So the class represents, number one, the informations related to the objects, and number two, the actions which the person can perform, the objects can perform. Here the objects are person. So what actions the objects can perform, a person can eat, a person can sleep, a person can study, play, etc. So a class is basically a template for similar objects, and it is a collection of data related to the object or information related to the object and the actions that the object can perform. The data is in the form of variables or fields, as we call it in Java, and actions are in the form of functions or methods. So here you can see in the diagram, the class is person. It represents different person. And what are the things that will be required to represent person? Those are some informations and those are some actions which the person object will perform. So this is the basic definition of a class. Class is a template for similar objects. It is a collection of data related to the objects and the actions that the object can perform. The data is in the form of variables and the actions are in the form of functions. I'll take one more example. In this second example, we have a class called car. So a car will be represented by the year, model, make, etc. And the actions which the car can perform are move, it can stop, it can accelerate. So those actions will be in the form of functions, and these informations will be in the form of variables. So if we have to define, if someone asks you what is a class, so class represents objects of similar nature. Like these are the cars, Camry, Camaro, Benz, Caprice, Sonata. These are all objects of the car class because the car class represents all different types of cars. So these Benz, Caprice and Sonata are the objects. And what will this class hold?
This will hold some information related to the cars. That is the year, the make, the model, the price, the uh, number of gates in it, its mileage, how much per liter this car will run, and then there will be some actions that the car can move, the car can stop, the car can accelerate, etc. So this is how we define the class and object. Again, coming to this first example, in this first example, we have shown that person will be the object, John is an object, this is an object, and we have to store some information related to these persons. Now, this scenario can be represented in a program. So let us try to represent the same thing in the program. So I'll come to the Visual Studio Code, and here we'll start writing the program. So this is example one. Let me start new example one. And in this example, what we need public static void main. This is required every time string. So the structure is ready. Now, in this program, we want to create a class called person as we have in the diagram. So let us come back to the diagram once again. The name of the class will be person. These are some variables. These are some functions. So coming back to the code. So I'll use a string variable name. I'll store string variable address, and maybe I'll store integer and things. Let's see. Age, city, gender, string, gender, teacher, age, and address or city we have already mentioned. So let us keep these variables, and now we have to use some functions. So how we create function? Void and each. This can be one function, or we can say void input info. This can be one function where all the informations will be taken from the user, and then we can void display info related to the person. So we have created, for as of now, two functions. One function will accept the values for all these variables, and one function will be displaying the information on the screen. And here we can comment the methods or functions of the class, and these are the information about person. And method of functions, that is actions performed by the person class. So this is how we create the class in our program. So in this program, we have a class that will represent person, and these are some of the informations that will be used in the program. Maybe we use only name and address, so we will not requiring these variables. Maybe we need email, then we can add some more variables. Maybe we can have some more actions to be performed. We can add those
as well, like void eat. So there can be any number of functions in the program as per requirement in that particular situation for which the program is being written. Now, suppose this program is being written for voting purpose in election. So what will be the action? Vote. So we have now three functions: input info, display info, and vote. So these are the three functions, and these are some of the variables where the information will be stored. Now, in input info, we'll take input from the user. So let us import java.util so that we can make some input in this program. Java.util.asterisk. And then we have scanner, sc, custom new scanner, system.n. And now we'll take name, address, gender, and age input from the user. So I'll write system.out.print enter name. First we'll ask for the name, and here we'll use name equals to sc.get next, sc.next line. So this will be the input for the name. Similarly, we can take input for the remaining variables as well. So name, address, gender, and age. So name, second will be address, third will be gender, and fourth will be age. Second information will be accepted in the address variable. Third information is gender. That will be stored in the gender variable. And then we have age. And now since age is of integer type, so we'll write next int. So we have taken input from the user, and suppose we have to display, then we'll write system.out.print ln. Name is plus name. Suppose we only want to print name and age since it is related to voting. And in vote class, we'll check if age is greater than equals to 18, then this person can vote. So we'll print display. We'll call display info so that it will print the name and age, and we'll write you can vote, or rather, and we'll print system dot out dot print lm eligible and else say you are not eligible to vote. If it is less than 18, they are not eligible to vote.
So here you can see we have a class called person, and this class stores the name, address, gender, age, etc. We have a function which will accept the values of a particular person. It will display the values of the person, and it will check whether the user can vote or not. Now, this is only a template. मतलब ये सिर्फ ढांचा है, इसका अभी कोई यूज नहीं है until and unless we use this class to create some object. Right now, it is only a class, a representation of object. ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा पर्सन का तो उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं और ये सारा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, विल राइट पर्सन वन इक्वल्स टू न्यू पर्सन. तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया पर्सन वन, और हम लोग इस पर्सन वन की तरह ही एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे which will be person टू. और rather हम लोग वोटर वन वोटर टू कर लेते हैं because this is related to some election process. So एक वोटर है वोटर वन, एक वोटर है वोटर टू. तो ये दो ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास हो गए. अब वोटर वन में क्या नाम रहेगा, क्या एज रहेगा, क्या वो वोट दे सकता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे वोटर वन डॉट. अब इसमें हम लोग के पास फंक्शन है इनपुट इन्फो. इससे हम लोग वोटर वन का इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे और इससे हम लोग चेक करेंगे कि वोटर वन वोट कर सकता है कि नहीं. तो हम लोग के पास एक वोट फंक्शन है. अब देखिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया वोटर वन. ये जो वोटर वन ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट मी रिप्रेजेंट. ये जो वोटर वन ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, इसमें क्या होगा, विल सी वोटर वन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी. और इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे. क्या क्या वेरिएबल होगा, इसका नाम होगा, इसका एज होगा, इसका जेंडर होगा, और इसका हम लोगों ने एड्रेस लिया. और इस ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगा, ये इसका इनपुट इन्फो फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं, और हम लोग वोट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और हम लोग डिस्प्ले इन्फो फंक्शन कॉल कर सकते हैं. इस पे ये हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. सो voter one will have his own name, his own address, his age, his gender, and he can we can input info. We can check whether voter one is eligible for voting. डिस्प्ले करने डिस्प्ले इनपुट करके हम लोग उसको देख सकते हैं. सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया वोटर नंबर टू. तो दिस इज वोटर टू. वोटर टू में फिर इसी तरह से ये सारी चीजें होगी जो हम लोगों ने वोटर वन के लिए लिखा है. उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका एज, उसका जेंडर, और फिर हम लोग उसको इन्फो से इनपुट कर सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं. तो लेट अस चेक कि हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ये आ जाएगा. सो दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी. One object is voter one represented by the person class, और person class में ये सारे variables ये functions थे. Similarly we have a voter two object. These are the object. So what is an object? Object is an instance of a class. This is the technical definition. Object represents one entity represented by the class. अब जब इस प्रोग्राम में हम लोग वोटर वन डॉट इनपुट इन्फो करेंगे तो ये इनपुट इन्फो फंक्शन जो अभी बनाया है वो कॉल होगा. वो बोलेगा कि उसका नाम डालिए, एड्रेस डालिए, एज डालिए, जेंडर डालिए, और वोटर वन डॉट वोट करेंगे तो ये बताएगा कि वोटर वन वोट कर सकता है कि नहीं. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर एक और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वोटर टू डॉट इनपुट इन्फो कॉल करते हैं. वोटर टू का इंफॉर्मेशन प्रोग्राम गैदर करेगा
और ये चेक करेगा कि ये वोटर 2 वोट कर सकता है कि नहीं। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका इंफॉर्मेशन यूजर से गैदर किया जाएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम चेक करेगा कि वोट कर सकता है कि नहीं। वोटर 1 और वोटर 2 दोनों का इस तरह से हम लोग का काम हो सकता है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को विल रन टू सी द आउटपुट। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले हमसे नाम मांग रहा है। सपोज person 1 is John. His address is Delhi. His gender is male. His age is 45 years. और जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि John 45 you are eligible to vote. इसने प्रिंट कर दिया you are eligible to vote. अब हम लोग सेकंड के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वोटर 2.info ये लाइन नंबर 45 में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो कॉल हो रहा है। लाइन नंबर 45 में जो है उसका नाम है सपोज टेसी, उसका एड्रेस है सपोज पुणे, उसका जेंडर है फीमेल और उसका एज है सपोज 15 ईयर्स। तो ये बता रहा है कि टेसी एज 15 यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड यूज इट इन अवर प्रोग्राम। फिर से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं और जो थ्योरी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है और जो फंक्शंस बनाए एवरीथिंग। अगेन हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं क्लास क्या है। क्लास एक टेम्पलेट है, एक स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को। ओके, स्टूडेंट क्लास होगा तो जितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सबको वो रिप्रेजेंट करेगा। जो स्टूडेंट क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल क्या बनाएंगे, स्टूडेंट का सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद उसका नाम, वो कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहा है, कौन से बैच में है, कौन से सेशन में है, इतना तो कम से कम हम लोगों को लेना पड़ेगा। और मेथड्स में क्या होगा, टेक एडमिशन, pay fee, attend class. These will be some of the methods, some of the functions that will be performed. Similarly, अगर हम लोग बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी क्रिकेट प्लेयर का, तो प्लेयर विल बी द क्लास। उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे, सबसे पहले उसका नाम, उसका एज, वो बैट्समैन है या बॉलर है, वो कितना गेम खेल चुका है, क्या रन से स्कोर कर चुका है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन। मेथड्स में होगा बॉल, बैट, प्ले, इस तरह का कुछ। तो ये हम लोगों का क्लास का डेफिनेशन होता है। क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज variables and the actions that are the function. The data is in the form of variables or fields and action in the form of functions or methods, and objects are the instance of the class. In the above example, John and Desi are the objects of person class. और इसी चीज को हम लोग प्रोग्राम में अगर देखना चाहते हैं तो दिस इज द प्रोग्राम क्लास पर्सन। अब इस क्लास पर्सन के अंदर हमारे पास नेम, एड्रेस, जेंडर, एज है और यहाँ पर हम लोगों के पास एक एक्शन क्या हो रहा है कि हम लोग उसका इंफॉर्मेशन इनपुट ले रहे हैं, डेटा गैदर कर रहे हैं। एक हो रहा है कि हम लोग उसको डिस्प्ले करा रहे हैं और एक हमारे पास वोट करने के लिए फैसिलिटी है कि उसका एज से चेक कर रहे हैं कि क्या वो वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर उसका एज ग्रेटर देन 18 है तो कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता है। और अभी जो हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट बनाया है प्रोग्राम के अंदर, इसको हम लोग देखते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने वोटर 1 और वोटर 2 बनाया है और अगर हम लोग इसका जो इनपुट हम लोगों ने किया है वो देखते हैं तो देखिए हम लोगों ने क्या इनपुट किया है। यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट किया है फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वोटर 1 के लिए इनपुट किया था जॉन, उसका एड्रेस था दिल्ली, उसका एज था 45 ईयर्स, उसका जेंडर था मेल।
तो ये सिस्टम ने बताया कि ये इनपुट इन्फो के थ्रू हुआ, और वोट फंक्शन ने बताया कि जॉन कैन वोट और जॉन कैन नॉट वोट व्हाटएवर। सिमिलरली वोटर फंक्शन, वोटर 2 में नेम हम लोगों ने एंटर किया था डेसी, उसका एड्रेस था पुणे, उसका एज था 15 ईयर्स, उसका जेंडर था फीमेल। तो इसने इनपुट के थ्रू इनपुट लिया, वोट के थ्रू बताया कि ये वोट कर सकता है कि नहीं। इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले इन्फो कर ऐसे लिख रहे हैं, हेलो जो भी वोटर का नाम है प्लस आर, हेलो जॉन यू आर 45 years old, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि ये वोट कर सकता है कि नहीं। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, बताएगा कि हेलो यू आर दिस many years old और यू आर एलिजिबल टू वोट या यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजेस किया है। अब इसको हम लोग फिर से रन कर रहे हैं। पहला यूजर के लिए हम लोग इनपुट कर रहे हैं, नेम इज जॉन, एड्रेस इज दिल्ली, जेंडर इज मेल, एज इज 45। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हेलो जॉन यू आर 45 years old, यू आर एलिजिबल टू वोट। हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट किया हेलो प्लस नेम। तो नेम क्या है यूजर का, जॉन है, तो हेलो जॉन। यू आर एज क्या है 45, तो यू आर 45 years old। अब हम लोग दूसरे यूजर की बात कर रहे हैं। दूसरे यूजर का नाम है डेसी, एड्रेस है सपोज पुणे, जेंडर है सपोज फीमेल, एज है सपोज 15 years। ये बता रहे हैं हेलो डेसी यू आर 15 years old, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो हेलो डेसी यू आर 15 years old, you are eligible to vote because you are not eligible to vote because यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा और हमारा एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन आवर प्रोग्राम। फिर से हम लोग एक बार रिकैप करते हैं बिकॉज दिस इज द very important concept in object oriented programming, and this is not only limited to Java. This concept is same in any object oriented language. It is same in C++, it is same in .NET, C Sharp, VB.NET, it is same in Java, it is same in many other object oriented language. So let us see the concept once again and try to understand. Here we have a class that is person. This person class is represented by some information related to the person. We are taking name, age, city, gender, etc. And this person can perform some action. So these actions that the person can perform is represented by the function. And this John user is one object of the person class. Desi is another object. There can be thousands of objects. There can be only one object. But until or unless we create object of the class does not have any use. Class usage starts with the object once the object is created. So we define class as a template, a structure for similar objects. What does it contain? It is a collection of data related to the objects and the actions that those objects can perform. The data is in the form of variables or fields, and actions are in the form of functions or methods. And objects are the instance of the class. Objects represents the class. And if we make the program for this same situation, we have one very good example right now here that we have just now created. You can see now here the same thing has been converted into a program. We have a class person,
And these are few of the variables of this class. And then we have few functions, input info, display info, vote. So the person class in this situation has three functions. The person class has three functions. The the input info will take the information of the person from the user. The display info will display the information of the person, and vote function will check and inform to the voter whether the person can vote or not. Now, this is just a template. It has no value until unless we create object. So what we do in the main function, we have created two objects. We have voter one. This is the object of the person class. This is the syntax how we create object. Person, name of the class, then the name of the object, new person. Then we have another object, voter two. And now we have two objects. These two objects have these values when we run the program. The voter one will have name as John, address is Delhi, age as 45, gender is male. Input info will take this input from the user. Vote will check whether John can vote or not. If the age is less than 18 years, John cannot vote. If his age is more than 18 years, John can vote. Similarly, the second object is Desi. She lives in Pune. She is a female of 15 years of age. So when we call voter2.vote function, it will check that the age of Desi is not greater than 18. So it will print you are not eligible to vote. Now I'll run the program to show the output once again so that we have a better understanding of how these programs are executing. Once you understand this concept, it will be very easy for the coming sessions where we'll explore more on classes and objects. So this is the first object. Maybe the name is John, the address is Delhi, the age, gender is male, and the age is 45 years. So the system is saying, hello, John, you're 45 years old and you are eligible to vote. Now this is the turn of the second voter. The second voter is suppose Desi. The address is suppose Pune. She belongs to Pune. She is a female and her age is only 15 years. So the system says that, hello, Desi, you are 15 years old, but you cannot vote since your age is less than 18 years. So this is all about classes and objects. We see objects all around us. Like we discussed just now, students are objects, so we can create a student class. Players are objects, so we can create player class. In the discussion, we have also discussed cars as we have cars class, and in the car class, we can have year, make, model, price, etc., the color of the car, and there can be some actions in the form of functions. And these are the objects: Camry, Camaro, Benz, Caprice, Sonata. These are the objects which are represented by the car class. I hope you have enjoyed this session and try to understand, go through the session twice, thrice, try to understand, try to run this program. And whenever we meet again in the next session, if you have any problem, you can discuss with us. Thank you very much.